अंत तक हमारे समर्पण में विश्वास योग्य रहकर उसमें हम स्थिर रहेंगे। Oh, we can see that their faces were forward. और उनका चेहरे जो है वो आगे सीधे थे, They never looked back, beloved people of God. और वो पीछे नहीं मोड़ते थे, They were going forward in their lives. और अपने जीवन में सामने की तरफ सीधे चलते थे। That is why the Lord said in the New Testament. और इस कारण ही प्रभु ने नया नियम में बताता है। One man came and said, Lord, I want to follow you. और एक व्यक्ति ने कहा, हे प्रभु मैं तेरे पीछे होना चाहता हूँ। Let me go and bury. और कहा मैं पहले जाकर दफन करूं। He that hath put his hand to the plow and looketh back is not worthy for his kingdom. और प्रभु ने लूका रचित सुसमाचार 9वां अध्याय में कहता है, जो मेरे पीछे होना चाहते हैं, जिसने हल के ऊपर अपने हाथ रखा, यदि वो पीछे न मोड़े तो उसका काम निष्फल होगा। Yeah, today we have more people backsliding more than the people who are really being saved. जो जितने लोग उद्धार पाते हैं उससे भी अधिक लोग पीछे हटते इन दिनों में हम देखते हैं। Yeah, I'm sure, beloved people of God, in these days God is going to have a people who will have a straight face, they will have a straight feet, they will walk in the straight way, straight forward, and will not look back, but will move on to God's purposes in their lives. प्यारे लोगों, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ प्रभु अपने लिए ऐसे लोगों को निश्चय ही पाएंगे इन दिनों में, जो लोगों का पांव सीधे है, जो लोग सीधे मार्ग में सीधे चाल चलेंगे और सामने ही जाएंगे, पीछे नहीं मोड़ेंगे। Sure, God's new creation man is a man who has set his face towards God's purposes and would not turn back. जो परमेश्वर की नई सृष्टि का मनुष्य जो है, Amen. उसका जो चेहरा है वो उसके सामने परमेश्वर की वो उद्देश्य के ऊपर ही लगे रहेंगे, वो दाया मुंह बाया या पीछे या संसार की तरफ नहीं देखेंगे। When we look at the life of the Lord Jesus, जब यीशु के जीवन को जब हम देखते हैं, a time came he set his face towards Jerusalem. और ये एक अवसर आया, उन्होंने यरूशलेम की ओर अपना मुंह रख दिया। He never turned back in his life. वो अपने जीवन में पीछे नहीं मुड़ा। He always set his face towards the will of the Father. वो हमेशा पर पिता की इच्छा की ओर ही अपना दृष्टि He रखा went straight forward. और वो सीधा चाल चला, Whither the Father led him, और जहाँ भी परमेश्वर उसको अगुवाई करे there he went. और उधर ही गया है। That is the testimony of the new creation man. और वही गवाही है इस नई सृष्टि का मनुष्य के विषय में। Whither the Spirit went, they also went. एसेकिएल ने नया नियम के दिनों में प्रकट होने वाला इस महिमा युक्त कलीसिया को भी परमेश्वर की ओर से दर्शन देखा। इसी प्रकार यूहन्ना प्रेरित भी बतमोस टापू में प्रभु यीशु मसीह को महिमा का देखा, और उस महिमा युक्त अंतिम दिन के कलीसिया को भी देखा। तब प्रभु की महिमा को देखते हुए अपने मुंह के बल गिरकर उसको दंडवत किया। Now we see in verse 15, और 15वां पद में हम देखते हैं, and his feet is like unto fine brass, as if they burned in a furnace. उसके पैर उत्तम पीतल के समान चमक रहे थे, Now that the same thing, भट्टी में तपाए गए हो। and that is the same thing that we read in the book of Ezekiel chapter 1. और वही बातें एसेकिएल का पहला अध्याय के अंदर भी हमने देखा। We see the feet like the burnished brass. और वही पहला अध्याय एसेकिएल का 7वां पद में जो हमने देखा, झलकाए हुए पीतल की नाई चमकते थे। Now we know that Ezekiel lived many years before John had this vision. और यूहन्ना प्रेरित दर्शन पाने के पूर्व, कई वर्षों के पूर्व ही एसेकिएल ने इस दर्शन को Now देखा। please turn with me to Revelation chapter 10. और प्रकाशित वाक्य अध्याय 10। I'm just giving you some clues. और कुछ चाबियां इधर हम देख सकते हैं। कुछ Now we read here, and I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud, and a rainbow was upon his head. फिर मैंने एक और बलवान स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा, उसके सिर पर मेघधनुष था। And his face was as were the sun, and his feet as pillars of fire. उसका मुंह सूर्य का सा और उसके पांव आग के खंभे कैसे थे।
And as we read on, we see many things that happen in chapter 10, which has happened which we can read in the book of Ezekiel chapter 2. और जो प्रकाशित वाक्य 10वां अध्याय में जो बातों को वर्णन किया गया है, ऐसा ही बातें यसेकिएल का अध्याय 2 पर भी हम देख सकते हैं। Now we can read that in verse 9. और उसको हम 9वीं पद में देख सकते हैं। And I went unto the angel and said unto him, Give me the little book. And he said unto me, Take it, eat it up, and it shall make thy belly bitter, but it shall be in thy mouth sweet as honey. मैं स्वर्गदूत के पास गया और उससे कहा, ये छोटी पुस्तक मुझे दे दीजिए। उसने मुझसे कहा, ले इसे खा जा, ये तेरा पेट कड़वा तो करेगी, पर तेरे मुंह में मधु सी मिट्टी लगेगी। Now we can read them in chapters 2 and 3 as we read on. और इस बातों को यसेकिएल का 2 और 3 अध्याय के अंदर हम देख सकते हैं। Now let us come back to the book of Ezekiel again. हम यसेकिएल का पुस्तक में वापस आए। Now the scripture says here, their feet were like the burnished brass. और उनका जो पाँव जो है जलकाए हुए पीतल की नहीं चमकते थे। And we read again here in verse 13, और As for the likeness of the living creatures, their appearance was like burning coals of fire. और उसका 13वां पद में हम और देखते हैं, जीवधारियों की रूप अंगारों और जलते हुए फलितों के समान दिखाई देते थे। And we also read here, and like the appearance of lambs. और भी हम देखते हैं, आग जीवधारियों के बीच फलितों के समान दिखाई देते थे। They were like the appearance of lambs. और वो एक फलिता की मान दिखाई देते थे। एक दिया की मान Lamb. Lamb. What is the Hindi ये word for lamb? जलते हुए और एक मिसाल या तो दीप दिया की मान दिखाई दिया। Right. Let's get the right word. These living creatures looked like lambs. ये जीवदारी जो है एक जलते हुए दिया की मान दिखाई It's so wonderful to see different aspects of the glorious church. और ये बहुत अद्भुत बात है महिमायुक्त कलीसिया का और विभिन्न अंगों से हम देख सकते As हैं। we have already seen, the natural man, the carnal man cannot understand these things. हम ये भी हमने समझ लिया है, प्राकृतिक एवं शारीरिक मनुष्य इन बातों को समझ नहीं सकता। But if we are a spiritual man who wants to be dominated, ruled and dictated by the Spirit of God, we will be able to understand different aspects. We will have a vision of God's new creation man, which is the church. और प्यारे लोगों, यदि हम आत्मिक मनुष्य हो जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे शासन हो जाएं, हम पवित्र आत्मा के द्वारा हम चलाए जाएं, तो इस दर्शन को हम देख सकते हैं जो परमेश्वर जो बना रहा है नया सृष्टि का एक मनुष्य है, अर्थात महिमायुक्त कलीसिया को। Please turn with me to Revelation chapter 1 again. और प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय को फिर हम पलट कर देखें। Yeah, when we turn to Revelation 1, we see the Lord Jesus in the midst of lambs. और यीशु मसीह को दीवटों के भीतर हम प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं। We see him in the midst of the 7 lamb or 7 candlesticks. और यीशु मसीह को प्रकाशित वाक्य में 7 दीवटों के भीतर हम देखते हैं। And we see him in verse 13, and the midst of the 7 golden candlesticks. और उन 4 सोने का दीवटों के बीच में वो दिखाई दे रहा था। Now here we see that the churches are likened to 7 candlesticks here. हम ये देखते हैं वो कलीसिया जो है 7 सोने की दीवट की मानित है। Now we can see the Lord Jesus in the midst of the lamps or the candlesticks. और हम इधर क्या देखते हैं, यीशु मसीह को 7 दीवटों के भीतर या 7 जलते हुए दिया के भीतर हम देख सकते हैं। We can see him in the midst of it. You cannot separate him from the candlesticks there. और जब उसके भीतर हम दिखाई देने से उसको उस दीवट से अलग नहीं कर सकते हैं। We read that in verse 19. और उसका 19वां पद, Write these things which thou hast seen, and things which are, and the things which shall be hereafter.
the mystery of the 7 stars which thou sawest in my right hand, and the 7 golden candlesticks. The 7 stars are the angels of the 7 churches, and the 7 candlesticks which thou sawest are the 7 churches. जो बातें तूने देखी है और जो बातें घट रही है और जो इसके बाद होने वाला है, उन सबको लिख ले। उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा है, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद ये है, वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के स्वर्गदूत हैं, और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। Now when Ezekiel saw the same thing in the vision, he could see that these 4 living creatures, they looked like lambs, और they looked like candlesticks. और जब यशकेल ने अपने दर्शन में देखा, ये चार जीवधारी जो है जलते हुए दिए के मानिंद उन्हें देखा। But when John saw that vision, it was more clear, and we can see the Lord Jesus together with the lambs or the candlesticks. और परंतु यूहन्ना ने जब प्रकाश पाया, उसका और भी स्पष्ट प्रकाश पाकर उसको स्पष्ट रूप से वर्णन कर रहा है, यीशु मसीह इस 7 सोने के दीवट के भीतर ही बीच में ही रहते हुए उन्हें देखा। So we see that another picture of the church is compared to burning lamps. और दूसरा चित्र है कलीसिया करिए, जो कलीसिया जो है और जलते हुए दिए की मानिंद है। Now when we turn to the book of Zechariah, जकरिया की पुस्तक को जब हम पलट कर देखते we read about a people there. और उधर एक झुंड के लोगों को हम देखते हैं, Chapter 4. और उसका अध्याय 4। Yeah, you can read it. अध्याय 4 उसके 2 से, और उसने मुझसे पूछा, तुझे क्या देख पड़ता है? मैंने कहा, एक दीवट है जो संपूर्ण सोने की है, और उसका कटोरा उसकी चोटी पर है, और उस पर उसके 7 दीपक है, जिनके ऊपर बत्ती के लिए 7 नालियां हैं, और दीवट के पास जलपाई के 2 वृक्ष हैं, एक उस कटोरे के दाहिने ओर और दूसरा उसकी बाईं ओर। तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, हे प्रभु, ये क्या है? जो दूत मुझसे बातें करता था उसने मुझको उत्तर दिया, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए प्रभु का यह वचन है, न तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के प्रभु का यही वचन है। हे बड़े प्राण, तू क्या है? जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा, और वह चोटी का पत्थर ये पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह ही अनुग्रह। फिर प्रभु का यह वचन मेरे पास पहुंचा, जरुब्बाबेल ने अपने हाथों से इस भवन को नींव डाली है, और वही अपने हाथों से उसकी तैयार भी करेगा। तब तू जानेगा कि सेनाओं के प्रभु ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, क्योंकि जिसने छोटी बातों का दिन तुच्छ जाना है, प्रभु अपनी इन 7 आंखों से सारी पृथ्वी पर दृष्टि करके साउल को जरुब्बाबेल के हाथ में देखेगा और आनंदित होगा। तब मैंने उससे फिर पूछा, यह 2 जलपाई के वृक्ष क्या है जो दीवट की दाहिनी बाईं ओर है? फिर मैंने दूसरी बार उससे पूछा, जलपाई की दोनों डालियां क्या है जो सोने की दोनों नालियां के द्वारा अपने में से सोनेला तेल उंडेलती है? उसने मुझसे कहा, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता। तब उसने कहा, इनका अर्थ ताजे तेल से भरे हुए वे 2 पुरुष हैं जो सारे पृथ्वी के परमेश्वर के पास हाजिर रखते हैं। Praise God. हालेलुया। Now here we read in verse 2, I won't read that all. In verse 2 it says, and said unto me, what seest thou? And I said, I have looked, and behold, a candlestick all of gold, with a bowl upon the top of it, and his 7 lamps thereon, and the 7 lamps thereon, and the 7 pipes to the 7 lamps which were upon the top thereof. Now here again we see Zechariah
has given with a vision of the church. और जकरिया को भी परमेश्वर ने कलीसिया की दर्शन दिया। And in the vision here, Zechariah is seeing the church as the lambs of God. और जकरिया जो है प्रभु का दीवट के रूप में इस कलीसिया को दर्शन पाया। And the lambs here, we see them as a lamp that is really burning out in the right proportion, giving the right flame, because there is a continual supply of oil into these lamps. जकरिया जो दीवट देखा दिया देखा है वो सर्वप्रथम संपूर्ण सोने की है और वो बराबर जलते रहा, एक जैसा ही जलते रहा, क्योंकि उसका जो जलने का जो तेल है बराबर मिलते ही रहा। And so, beloved people of God, we need to know that the lamps which Zechariah did see here, that is the same thing which Ezekiel did see in chapter 1. It is the church, it is talking about God's people, a church is in the last days, which shall be continually under the supply of the Spirit of God. प्यारे लोगों, जो जकरिया ने जो देखा है वो कलीसिया को जो यसेकिएल ने भी इसी प्रकार उन्हें देखा है, अर्थात इस अंतिम दिन का परमेश्वर की महिमा युक्त कलीसिया है जिसको परमेश्वर अपने ओर से और पवित्र आत्मा को बराबर और उंडेलते रहेगा। Now let us go a little more closer. I feel that we need to go a little more closer. और भी हम नजदीक में जाएं इसको। Now as we come here to verse 3, and the two olive trees by it, one upon the right side of the bowl, and the other upon the left side thereof. So I answered and spake to the angel that talked with me, saying, What are these, my Lord? Then the angel that talked with me answered and said unto me, Knowest thou not what these be? And I said, No, my Lord. Then he answered and spake unto me, saying, This is the word of the Lord unto Zerubbabel, saying, Not by might, not by power, but by my spirit, saith the Lord of hosts. Who art thou, O great mountain? Before Zerubbabel thou shalt become a plain, and he shall bring forth the headstone thereof with shoutings, crying, Grace, grace unto it. Moreover, the word of the Lord came unto me, saying, The hands of Zerubbabel have laid the foundations of this house. Now the Spirit of God, after having said about the lambs and the trees, and talking about the continual supply of oil, and he brings down to say that not by might, not by power. And then he says, the hands of Zerubbabel have laid the foundations of this house. His hand shall also finish it. Thou shalt know that the Lord of hosts has sent me unto you. He is relating all these unto God's own house. प्यारे लोगों, जब I want to walk as a child of the light. I want to follow Jesus. God set the stars to give light to the world. The star of my life is Jesus. In him there is no darkness at all. The night and the day are both alike. The Lamb is the light of the city of God. Shine in my heart, Lord Jesus. I want to see the brightness of God. I want to look at Jesus. O clear sun of righteousness, shine on my path and show me the way to the Father. In him there is no darkness at all. The night and
Lord Jesus. Shine in